हाय एवरीवन। टुडेज लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज़ पावर बीआई डैक्स। डैक्स स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सो डैक्स में क्या क्या इंटीग्रेंट्स आएंगे या मैंने न्यू कॉलम, न्यू मेजर, हाउ द डैक्स फंक्शन वर्क्स एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक। मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। DAX stand for the data analysis expression. Data analysis expression means what? Means whatever expressions we need to do the data analysis, we are going to implement from the DAX. DAX means what? It is a formula language specifically designed for the data modeling and reporting in a Power BI, Power Pivot and analysis services. Means what? हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं? We are going to develop some different formulas in a data modeling to have analytical reports to generate analytical. Now DAX is used to perform calculations, create custom measure, generate new data columns in a Power BI models and enabling more sophisticated analysis and reporting. मीन जितनी भी कॉम्प्लिकेशन डेटा रहेगा उसको स्मूथली और इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू ऐड कस्टम मेजर्स एंड क्यू न्यू कॉलम्स. Now, what is these custom measures and new columns? What are the key features in DAX? So, we're going to learn about in this series of the Power BI DAX. We're going to learn about calculated columns, measures, advanced filtering, time intelligence, aggregation, and summarization functions. So, how these all functionality works in BI that we are going to learn. So, calculated columns means what and measures means what that we are going to first understand. Okay. On practical level, I will teach you in the next lectures. Okay, what are the new columns and measures, okay, in detail. So I will give the basic things about new columns and measures in this session. So new column, calculated at row level, store in the model. Measures calculated at aggregate level. Means what exactly? Let's say we have a Power BI data. I go to this table. Now modeling tool. नहीं, इफ़ आई गो फॉर दिस ट्रांजैक्शन स्टेट, सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, स्टोर आईडी, ओके, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी एंड क्वांटिटी है. नाउ देयर आर द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है. नाउ इफ आई वांट टू हैव अ टोटल सेल, sale means was I have a quantity but I don't have a price over here. The price has to take it from what? I want to take the price from the product lookup, product retail price. बराबर ना? So I want to take that product retail price over here for developing the what is total sale. And now this is your horizontal calculations. So whenever we want to do the horizontal calculations, we have to need new column. Means what? Quantity into price, then that will be the total sale. So what I will do? I will go to the new column. Now first understand, I will give the calculated function how it works in details on the next lecture. Just understand what is new column, what is new measure, that's it. So add total sales equal to. So I need to multiply quantity. So I take it as a quantity column from this. Okay, I need to multiply this quantity column by the retail price. Now product retail price is not a part of this table. Okay, yeah, this query बोल सकते हैं हम लोग. Okay, is not a part of this query. Now what I have to do, I have to pull the total price from the product lookup in this query. To pull that one, I need use calculate function. Okay, sorry, I use related functions. So I use related what? I need to have a retail product retail price. So यहाँ पे मैं product retail price लेता हूँ. So I put that one. So related क्या कर रहा है? Will pull the data from another function. So यहाँ पे मैं enter मारता हूँ. So this is what your new column do. So न्यू कॉलम ने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेटेड फंक्शंस हम लोगों ने कैलकुलेट करके न्यू कॉलम में हम लोगों ने डिटेल्स डाल दिया. सो दिस इज व्हाट total sale of individual product. Okay, so this how works is called as a new column. Now what is measure? What is measure? And यहाँ पे new measure आता है. New measure is what exactly? It will give overall summarize of the total, means overall how much sale has happened. Now this total sale is for the particular date, for particular date, particular transaction, that is sales volume. I want to have the overall sales happen in this
transactions. Okay, so what I will go for the new measure. Okay, now new measures. Okay, okay, અને मैं बोलता हूँ sales, total sales निकालना है, तो sales is equal to sum of what total sales that is we have developed. Okay, total sales value. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, total foodman transaction total sales enter. Now यहाँ पे देखो, whenever I put the new measures it has not added in the new column. यहाँ पे देखो new measures बोल के यहाँ पे ऐड हो गया, यानी यहाँ पे sales बोल के. Now डिफरेंशिएट देखो, न्यू मेजर के लिए कैलकुलेटर का सिंबल आ रहा है और कॉलम के लिए समराइजेशन का सिंबल आ रहा है ना. सो न्यू कॉलम क्या हो रहा है, जब भी न्यू कॉलम करते हैं दैट विल बी ऐड टू योर, आपका डेटा में ऐड हो रहा है, बट मेजर्स आर नॉट गोइंग टू ऐड इन योर. सो लेट्स गो टू दिस वन. सो देखो कैलकुलेटेड एट रो लेवल. सो न्यू कॉलम करें तो हम लोगों ने क्या किया, रो लेवल पे कैलकुलेट किया. कैलकुलेटेड एट एग्रीगेटेड लेवल. एग्रीगेटेड यानी क्या हो गया, ये जो टोटल सेल्स दिखा रहा है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन एग्रीगेटेड लेवल. यानी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं आई टुक इट एज ए न्यू, और यहाँ पे मैंने क्या किया, समझ लो नेम कार्ड्स ऐड करता हूँ. सो यहाँ पे देखो मेरा टोटल सेल्स को मैं ऐड करता हूँ. सो दैट विल गिव्स 1.2 मिलियंस. मैं न्यू सेल लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स लेता हूँ, दैट इज अगेन 1.2 मिलियंस. ओके, सो ये इसने क्या किया, ओवरऑल एग्रीगेटेड सेल्स निकाला विच वी आर गोइंग टू डू इन दिस वन एक्चुअली. ओके, क्लियर. सो ये क्या कर रहा है, एग्रीगेटेड वैल्यू दे रहा है. देन स्टोर इन अ मॉडल. स्टोर इन मॉडल यानी क्या हो गया, यहाँ पे देखो नया कॉलम जनरेट हो गया, उसके वजह से मॉडल में स्टोर हो गया. दिस इज कैलकुलेटेड ऑन दी फ्लाई. सो ये यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे किधर भी ऐड नहीं हुआ. इंक्रीज मॉडल साइज मोर मेमोरी इफिशिएंट. सो यहाँ पे ये ऐड होने की वजह से क्वेरी का साइज बढ़ रहा है, फाइल का साइज बढ़ रहा है. ये कहाँ पे भी ऐड नहीं हो रहा है, बैकएंड में कैलकुलेट करके रख रहा है. नो साइज इंक्रीज. स्टैटिक ओनली अपडेट्स व्हेन द डेटा इज रिफ्रेश. डायनेमिक अपडेट बेस्ड ऑन रिपोर्ट फिल्टर्स. यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया तो ये वाले अपडेट हो जाएंगे. यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर्स, यानी यहाँ पे मैं कौन सा भी समझ लो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे समझ लो मैंने एक पाई चार्ट ऐड कर दिया समझ लो, वहाँ पे मैंने डाल दिया समझ लो क्वांटिटी सेल फॉर दी, समझ लो प्रोडक्ट में से ब्रांड लेते हैं समझ लो, या रीजन में से रीजन लेते हैं समझ लो. लेट्स स्टार्ट रीजन. ओके, रीजन आईडी में से सेल्स रीजन ले दो. सो डिफरेंट रीजन्स. अगर यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट में क्लिक करता हो तो ये डायनेमिक है, बराबर ना. सो यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड अ डायनामिक अपडेट बेस्ड ऑन रिपोर्ट फिल्टर्स. यूजफुल फॉर इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, यूजफुल KPIs एंड डायनेमिक एग्रीगेशन. सो KPIs यानी मैं ये KPIs दिखा रहा हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखा रहा हूँ, टोटल सेल्स कितना हो गया, यहाँ पे यूज हो रहा है. और दिस न्यू कॉलम्स आर फॉर द कैलकुलेशन एट पर्टिकुलर क्वेरी लेवल. So profit is equal to sales minus sales cost, that is vertical. This column minus this column is your profit, but total sale is overall the column of पूरे column का aggregate data करें. So this is what your new column versus new measures. यहाँ पे और एक functionality आता है that is called implicit versus explicit measure. Implicit measure and explicit measure यानी क्या रहता है? Explicit measures यानी यहाँ पे देखो, this is implicit measure which is calculated by the default sales column. Explicit measure is calculated by your measures. यानी measure यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके थ्रू कैलकुलेट किया, that is called your measures. So यहाँ पे देखो, calculate automatically by pair, limited to the basic aggregation sum average, specifically visit for the visuals, cannot be modified beyond changing the aggregation base for the quick and simple aggregate, that is sales sum. Now explicit में क्या है, create manually by using DAX code. Create manually by using DAX code. ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने DAX का कोड यूज़ करके मेजर्स यूज़ किया और यहाँ पे उसको एग्रीगेशन डाल दिया. सो दिस इज़ योर एक्सप्लिसिट मेजर एंड दिस इज़ योर इम्प्लिसिट, बिकॉज यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स बोल के कॉलम लिया है और यहाँ पे मैंने क्या किया, मेजर्स बोल के लिए. Can be used across the visuals, reports and dashboards. Highly customizable DAX function. So यहाँ पे calculate measures वगैरह जब करेंगे तो हम लोग और डिटेल में सीखेंगे how we are going to customize these. Best for advanced and reusable calculation. So हम लोग जब भी reusable calculations करेंगे that we can use quickly these measures for your explicit calculation. So this is all about your implicit measures and explicit measures. So thank you very much. This is for your introduction about Power BI DAX. So we're going to learn in next topics how basic formulas
and then advanced formulas in the DAX. So stay tuned. If you like our video, press like button and subscribe button for getting more details about such courses regularly. Thank you very much.